बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको एक ऑथेंटिक रेसिपी बनाकर दिखाएंगे जो हम अपने ट्रेडिशनल तरीक़े से बनाएंगे। इसके लिए हमने मटन का गोश्त लिया है। तो बकरे की हमने रान का गोश्त लिया है जो एकदम साफ़ सुथरा होता है। उसके बड़े पीस लेके हमने उनको फ्लैट करवा लिया है। तो जब गोश्त फ्लैट हो जाता है तो उसी को पसंदा बोला जाता है। तो चलिए आज हम आपको पसंदे की रेसिपी बनाकर दिखाते हैं, पसंदे की डिश। तो इसके लिए हमने जो जो सामान लिया है मैरिनेशन के लिए पहले हम आपको दिखा दें। सबसे पहले हमने लिए हैं थोड़े से चने, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, 3 से 4 ड्रॉप्स हमने केवड़े के लिए हैं, एक प्याज ली है, 2 चमची दही ली है, थोड़ी जावित्री जायफल है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, 4-5 जवे लहसुन के हैं, 2 हरी इलायची है, ये 3 चमची नारियल का बुरादा है, ये थोड़ी सी सुरख मिर्च और ये हल्दी है। तो ये सारे सामान को पीस कर हम पसंदों में मैरिनेट करके रखेंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। वैसे तो आम तौर पर इसको सारी रात के लिए मैरिनेट करके रखा जाता है, ओवरनाइट। तो चलिए अब हम आपको इसकी ग्रेवी की मसाला दिखा देते हैं। इसके लिए हमने एक तेज़पात, एक लौंग, 2-3 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक मीडियम साइज़ की प्याज, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चमची कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चमची हल्दी, 1 चमची लाल सुर्ख मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। और साथ में ही हमने इसके नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा और जावित्री जायफल भी पीस के रखा है। तो ग्रेवी में भी हम डालेंगे जावित्री जायफल और नारियल, और अंदर मैरिनेशन में भी ये तीनों चीज़ें पड़ेंगी। अच्छा, धनिया आप अपने हिसाब से, अगर आपको पतला खाना है तो धनिया कम कर लें और गाढ़ा खाना है तो धनिया इतना ही रहने दें। तो ये हमने 3 टीस्पून धनिया लेके रखा है। तो पसंदे हम मसालेदार और लटपटे ही बनाएंगे, ज़्यादा उसको पतला नहीं रखेंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस मसाले को पीस लेंगे। और पसंदों में मिलाकर इसको 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। वैसे तो इसको ओवरनाइट रखा जाता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो हम इसे 2 से ढाई घंटे रखेंगे। उसके बाद किस तरीके से बनाएंगे वो दिखाएंगे आपको। तो ये बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बन के तैयार होगी, डिश बन के तैयार होगी है। तो अच्छे तरीके से मसाला लगाने के बाद अब हम इसे ढक कर रख देंगे। आज हमारे गले में तकलीफ़ है तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। आगे की रेसिपी हम आपको साइलेंटली दिखाएंगे। जो हमें मेन बात समझानी थी वो हम समझा चुके। अब आगे की रेसिपी आप इसी तरीके से देखें। मैं किधर की रहेगा?
तो नजदीक में मत लाओ बेटा, बस। पीनी पीनी धारी आई लाल, बस। ये दिखाएंगे कि हमने नमक कितना। एक सेकंड अभी मत लेना। प्लेट आ रही है। जैसे तो कोरमा ही तो है।